Morning children, our next topic is prime factorization. Okay, so children, prime factorization is very easy. So prime factorization means if a natural number is expressed as the product of prime numbers. Okay children, you know the prime numbers means 2, 3, 5, 7. Okay, so if a natural number is expressed as the product of prime numbers, then the factorization of the number is called its prime or complete factorization. Okay, see example 6. देखो 6 2 into 3. Okay, 2 into 3 21 3 into 7 12 2 into 2 into 3. Okay, 100 2 into 2 into 5 into 5. So each of these is the prime factorization of the given number. Okay, prime factorization of 6 is 2 into 3. Prime factorization of 21 is 3 into 7. Okay, so if a natural number is expressed as the product of prime numbers only, ठीक है, prime factorization में क्या करते हैं, we take the prime numbers only. Okay, then the factorization of the number is called its prime factorization. See children, factor tree. Look at the following two different factor tree for the following number 60. Okay, यहाँ पे आपको 60 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे 60 का फैक्टर ट्री बना है. देखो फर्स्ट वन, देखो 60 इज डिविजिबल बाय 10. ओके, 10 6 are 60, तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो 6, तो 10 into 6. 60 को हमने कितना लिखा है, 10 into 6. Now 10 is again factorized. 10 is factorized. देखो 10 is divisible by 2. How many times? 5. तो 2 5s are 10. ठीक है, तो prime factors of 60 are 2 and 5. Then 6 is again factorized. 3 2s are 6. Okay. आपको फैक्टर ट्री को तब तक उसको करते जाना है जब तक आपके पास सारे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते हैं. ओके, तो फैक्टर ट्री ऑफ 60 यार देखो 2 into 5 into 3 into 2. ओके, नाउ अनदर वे to form the factor tree of 60, देखो 60 is also divisible by 4. Okay, how many times? देखो 60 divided by 4 करो तो कितना आता है, 15, तो 4 into 15. Now 4 is again factorized, 2 into 2. 15 is a composite number, it again factorize, 5 into 3. Now they do not factorize. Why? Because they all are prime numbers. Okay, so factor tree of 60 are 2 into 2 into 5 into 3. Okay, from factor tree second, prime factorization. Okay, so from both we have 60 equal to 2 into 2 into 3 into 5. तो we ultimately arrive, देखो दोनों में सेम है ना, हमको कौन कौन से फैक्टर्स मिले हैं, प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 60 के, 2 into 2 into 3 into 5. तो 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 60. ओके, 60, तो ये प्रोडक्ट सेम हो गया 60. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इफ़ अ नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, देन द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3. So children, first question you have to do it in book. Okay, so children, first question, here are two different factor trees of the number 90. Okay, write the missing number. So see children, 90 first, 90 is divisible by 10. Okay, 10 how many times? 90 divided by 10 is 9. Okay, it means the product of 10 and 9 is 90. तो 10 into 9. ओके, यहाँ पे आपने कितना हो गया, 10 into 9, 10 9s are 90. Now 10 is factorized, 10 is divisible by 2, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 10 divided by 2 करके देखा कितने टाइम्स किया, 5. इट मीन्स द मिसिंग नंबर हियर इज 5. दिस इज 5 चिल्ड्रन. ओके, यहाँ पे 5 लिखोगे बिकॉज 10 को आपने किया फैक्टराइज, तो 2 into 5. Okay, now 9 is factorized, 9 is divisible by 3 and how many times? 3 times. 9 divided by 3 is 3. Okay, तो यहाँ पे एक नंबर तो लिखा है 3, तो what is the missing number here? 3. Okay, 3 3s are 9. Okay, now another way, 90, देखो this is given 45, यहाँ पे 45 दिया है, तो 90 divided by 45, 90 divided by 40 is 2, 45 is 2. Okay, तो 45 into 2 is 90. Okay, now 2 is prime number, then 45 is again factorized. Okay, यहाँ पे 15 लिखा है, तो 15 3s are 45, तो 15 and the missing number is 3. Okay, now 3 is prime number,
15 is composite number, it again factorize. देखो 5 यहाँ पे 15 is factorized, 15 is divisible by 3. Okay, 3 how many times it will go? 5. So 3 5s are 15. Okay, so the missing number is 3. Children, this is 3. Okay, this is 3, this is 5, this is 3, and this is 2. Okay, so for first question you have to do it in book. Okay, now see children, second question, find the prime factorization of the following number. First is given 72. So how we find the prime factorization of the given number? See children, देखो 72. सी अब यहाँ पे आपके जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपका बहुत हेल्प करेगा. देखो द डिजिट प्रेजेंट एट वंस प्लेस इज 2, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, सो इन रफ कॉलम यू हैव टू डिवाइड. चिल्ड्रन अगर नहीं आता तो रफ कॉलम में आप पहले यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे. ओके, तो 72 इज डिविजिबल बाय 2. देखो 2 3 ज़ा 6, 7 minus 6 is 1, 12, 2 6 are 12. ओके, हाउ मेनी टाइम्स? 36. ठीक है, तो 2 को 72 से डिवाइड करके कितना आया? 36. नाउ डिजिट प्रेजेंट एट वंस प्लेस इज 6. अगेन इट इज़ फैक्टराइज बाय 2. चिल्ड्रन जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से करोगे, लेकिन आपको देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है. ठीक है, द डिजिट प्रेजेंट एट बड़े नंबर को नहीं लेना है, स्टार्टिंग फर्स्ट प्राइम नंबर से लेना है 2. Now 36 is also divisible by 2. 36 divided by 2 is 18. Okay, 36 देखो 36, 2 1s are 2, 16, 2 8s are 16. Okay, 18. तो 36 divided by 2 is 18. Now 18 is again divisible by 2. 2 9s are 18. Now 9 is not divisible by 2. Okay, it is divisible by 3. ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा? 3. देखो 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Okay, so what are the prime factors of 72? 2 product of the prime number. Prime factorization का मतलब क्या होता है? Product of the prime numbers. तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, और 24 3s are 72. Okay, so the product of the prime number is called the prime factorization. Clear children? Okay, then see second, prime factorization of 172. So the digit present at one's place is 2. It means 172 is divisible by 2. Okay, in rough column you have to divide. 172 divided by 2 is 86. Okay, 86. Now 86 is again divisible by 2. Divide करो रफ में, अगर नहीं आता तो देखो 86 divided by 2 is 43. Now 43 is prime number, so it is not divisible by any number. So 43 1s are 43. Okay, so what are the prime factors of 172? 2 into 2 into 43. 2 2s are 4, or 4 into 43 is 172. Clear children? Children, third and fourth is very easy. Then see the fifth one, 8712. 8712. Digit present at one's place is 2. The number is divisible by 2. Okay, ये किससे divisible होगा? 2. So in rough column you have to divide. देखो 2 4s are 8, then 7, 2 3s are 6, 7 minus 6 is 1, 1, bring down 1, 2 5s are 10, then 1, then 2 12, 2 6 are 12. So 8712 divided by 2 is 4356. Okay, now it is again divisible by 2. Now again 4356 divided by 2, we get 12178. ठीक है, द डिजिट प्रेजेंट एट वंस प्लेस इज एन इवन नंबर, इट इज़ अगेन डिविजिबल बाई 2. तो फिर से 2178 को डिवाइड करो 2 से, वी गेट 1089. ओके, नाउ 1089 इज नॉट डिविजिबल बाई 2. वाई? बिकॉज द डिजिट प्रेजेंट एट वंस प्लेस इज एन ऑड नंबर. ओके, ये ऑड नंबर आ गया. और नाउ चेक द डिविजिबिलिटी रूल बाई 3. देखो 1 + 8 9 और 9 9 18. ठीक है, देयर सम इज 18. इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 3. ओके, अब आपको क्लियर हो गया ना कि ये 3 से डिविजिबल हो सकता है क्योंकि इसका सम कितना आ गया? 18. ओके, तो अब आप 3 से इसको डिवाइड करके देखना चिल्ड्रन. ठीक है, आप 3 से इसको डिवाइड करोगे, रफ में आप यहाँ पे डिवाइड कर लेना. देखो 3 3s are 9, यहाँ पे 1 हुआ 18, 3 6s are 18, 3 3s are 9. ओके, नाउ सम ऑफ ऑल द डिजिट, 3 + 3 6, 6 + 6 is 12. Again it is divisible by 3. Okay, so 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 1s are 3.
Okay, now it is not divisible by 3 because their sum is, देखो 2 plus 1 3, 3 plus 1 is 4. Now it is not divisible by 3. Now 121 is divisible by 11. Okay, children, we know 11 square, 11 into 11 is 121. ठीक है, तो 11 का कितने टाइम्स आएगा, 11 वन सा 11, फिर यहाँ पे 1 बाय 11 वन सा 11, 11 वन सा 11. Okay, so they are the prime factorization of 8712. When we find the product, जब इसको मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे, we get the same number 8712. अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सही है तो जब आप उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ सी चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, बाकी इनको इसी मेथड से आपको फॉलो करना है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस दैम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. सो चिल्ड्रन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100. देखो 100 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 3 times 9. Okay, then we find the prime factor of smallest 3 digit number and greatest 3 digit number. So see children, देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 3 times 9. ओके, नाउ फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 and 999. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 आर, देखो 2 5s are 10, 0. 50 is again divisible by 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now 25 is divisible by 5, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. Okay, so the prime factor of 100 is 2 into 2 into 5 into 5. 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are 100. Okay, now prime factor of 999. देखो 909 digit present at ones place is 9. Okay, so it is not divisible by 2. Now check the divisibility by 3. देखो 9 9 18, 18 plus 9 is 27. It means the number is divisible by 3. देखो 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. Again it is divisible by 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3. Okay, देखो 1 2 3. It means again it is divisible by 3. 3 3s are 9. 2 21, 3 7s are 21. Now 37 is prime number. Okay, तो 37 1s are 37. So they are the prime factors of 999. प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको केवल प्राइम नंबर्स को लेना है. ठीक है, तो इफ वी फाइंड द प्रोडक्ट वी गेट 999. Okay, then see question number 4. Question number 4 is write the smallest 5 digit number. तो smallest 5 digit number means 1 and 4 zeros. Okay, and express it in the form of prime factor. उसको कैसे express करना? In the form of prime factor. Okay, so see children, this is the smallest 5 digit number. Then we find the prime factorization. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, देखो 1s 10s 100 1000 10,000. ओके, इट इज डिजिट प्रेजेंट एट 1s प्लेस इज 0. इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. 2 5s are 10 and 3 zeros. ठीक है, फिर 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0 0. It is again divisible by 2. ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0. Again divisible by 2. 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now 625 is now divisible by 5 because the ones place number is 5. Okay, तो 5 1s are 5. ठीक है, 12 are 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again it is divisible by 5. 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Then 5 5s are 25. So product of prime numbers 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5. Clear children? So they are the prime factorization of 10,000. Then see the next one. I am the smallest number. Okay, I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? आप बता सकते हो कौन सा है कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4, जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है. तो कैन यू फाइंड मी? तो सी चिल्ड्रन, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स फॉर स्मॉलेस्ट नंबर्स आर, देखो कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 and 7. Okay, so the required number is 2 3s are 6, 6 5s are 30, 37s are 210. Okay, so the factors are 2 3 5 and 7. Clear children? So children, complete exercise 3.3 in your maths copy.